हेलो। कि फर्स्ट ऑफ ऑल राहुल, वो वेलकम रायपुर फिल्म सोसाइटी। आपकी थैंक यू। बहुत ही प्यारी फिल्म अभी हम सबने देखी। थैंक यू सो मच। एंड मैंने तो बहुत मुझे ये मूवी बहुत पसंद है। अजय ने ही रेकमेंड किया था जस्ट ड्यूरिंग, जब होली चल रहा था ना, उसी टाइम पे मैंने ये मूवी देखी थी। सो इट वाज अ ग्रेट वॉच। थैंक यू सो मच। सो या अजय वाज अ फ्री पीआर, उसने ये फिल्म पे काम किया है ना, तो ही इज लाइक Yeah. बट अजय वर्क वेरी हार्ड एंड फॉर लॉन्ग 6 मंथs तूने काम किया ना अजय? Yeah, ऑलमोस्ट something. Yeah, जून Gulmohar टू to the end. दिसंबर or something. Yeah. Yeah, nice. But I'm so glad. Thank you for coming and watching the film, and I'm so excited कि आप सबसे आज बात करूँ. It's been quite 1.5 months since the film has released. तो मुझे भी अच्छा recap हो जाएगा as I speak with you. Yeah. But I'm very excited that all of you met, and what you all are doing with Raipur Film Society is very exciting. कि आप सब मिलते हो और फिल्म देखते हो इकट्ठे. It's a very nice feeling. So thank you. थैंक यू। या तो सो हाँ राहुल, सो हाँ हाँ, लाइक ये मूवी का आइडिया जैसे ये पहले हम लोग देखे हैं ना, फैमिली फिल्म्स एंड ऑल। सो फैमिली फिल्म्स, उसका एक और अलग जनर होता है जब हम अ, मतलब उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। सो इस हाउ डिड दिस आइडिया कम अबाउट? जैसे आप इंस्पायर किस चीज से हुए कि कि फैमिली ऐसे फिल्म बनाओ. बनाना है फिल्म? बिकॉज आई डोंट थिंक ऐसे देखे हैं मूवी, जी नॉट इन सेंस की फैमिली फिल्म, बट a film you can watch with family which is about family, and it has so much truth and मतलब इतना grounded है स्टोरी, so characters सब कुछ। जी. so थैंक यू. थैंक यू. बट मुझे ऐसा लगता है कि इट रियली इज अ पार्ट ऑफ द सेंसिबिलिटी. एंड जैसी एक तो चीज होती है जैसी फिल्म में मैं पसंद करता हूँ, which is inclining more towards realism, even if the story is very fictional and very out of the if it's a fantasy film, but if you treat it in a very realistic way, then I get invested in it. That's my sensibility. Those are the kind of films that I get inclined to. इसलिए मुझे for some reason एक्शन फिल्में कभी पसंद नहीं आई हैं, for some reason. एंड मुझे आप 5 मिनट एक्शन फिल्म की दिखाओ, मैं सो जाऊंगा. And for some reason, it's just I love human dramas. I love realism portrayed on film. And मेरी जो स्कूलिंग भी है, when I started my career, मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई थी. So I love that whole idea of कि आप कैमरा डालो और फिर आप रियलिज्म को कैप्चर करो. तो मेरी जो ट्रीटमेंट भी थी इस फिल्म में, मैंने सब एक्टर्स को भी कहा कि वी हैव टू फील वेरी वेरी रियल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. एंड तो वो एक चीज हुई सेंसिबिलिटी के बारे में. दूसरी चीज जैसे राइटिंग में अगर आप कहे, बिकॉज इवन इन द राइटिंग मेरी जो को राइटर है अर्पिता मुखर्जी और मैं, हमने वी वर नॉट होल्डिंग आवरसेल्व्स बैक. Maybe because it was our first film, first fiction film in a full narrative, and which I was directing also, I could be very bold कि जो है वो बातें वो बता दो आप जैसा है. There was no filter at all. And I was very convinced about that style of writing and then that style of directing. So it was just the sensibility that I'm attracted to. इट इज ग्रेट कि सारे कैरेक्टर्स बहुत, सबका जर्नी अलग है बट सबका जर्नी रिलेटेबल है। सो दैट हाँ. वाज वेरी एनरिचिंग टू वॉच। हर कोई Thank you. कैरेक्टर का अच्छा सब्सटेंस है एंड दे हैव अ गुड आर्क। सो Thank you. या, also how did you come about this title Gulmohar, and why? So जब हम लिख रहे थे ना द फिल्म, दो तीन चीजें थी. एक तो वी न्यू दैट वी हैड टू सेट इट इन दिल्ली. वो मैं बहुत क्लियर था बिकॉज आई वांटेड टू कैप्चर दिल्ली इन अ वे दैट आई वाज अट्रैक्टेड टू इट. मैं बॉम्बे का लड़का हूँ. आई यूज टू गो टू दिल्ली ओवर द लास्ट 10 years बिकॉज मैं मीरा नायर के साथ बहुत काम करता था. एंड वो दिल्ली में रहती है जब भी वो इंडिया में रहती है. तो मेरा बहुत आना जाना हो रहा था. एंड आई लव दैट सिटी विजुअली, क्योंकि वो एक ऐसा शहर है जहाँ पर आपको वो इमारतें भी दिखेंगी जो पुरानी इमारत, लाइक ऑल द टोम्स एंड एवरीथिंग, एंड प्लस यू सी द न्यू बिल्डिंग्स कमिंग अप.
एंड बीच में सड़क है. So when you look at the left, you'll see all these old Purana Killas, everything, and on the right side, you'll see new buildings coming up. So that was a very fascinating thing to capture on film. तो जब लिख रहे थे, जब आइडिया आया था मुझे और अर्पिता को, तभी we were very clear कि इसे दिल्ली में हमें सेट करते हैं. एंड देन जैसे जैसे हमने सबसे पहले कैरेक्टर्स को चॉक आउट किया बिफोर इवन द स्टोरी, तो हमें जब पता चला कि ये 5 प्राइम कैरेक्टर्स है, 5 या 6. एक चीज मुझे बहुत क्लियर था कि आई डोंट वांट टू ट्रीट दिस एज जस्ट कुसुम स्टोरी या जस्ट अरुण स्टोरी. आई वांट दिस टू बी लाइक अ पोर्ट्रेट ऑफ एवरीबॉडी इन दिस हाउस. इनफैक्ट जब मैं इंटरव्यू भी कर रहा था, किसी ने तो मुझे, क्रू मेंबर ने पूछा कि ये कहानी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, और एक एक पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए कहानी. एंड आई वाज वेरी क्लियर कि ये एक पर्सन की कहानी नहीं है, ये एक पोर्ट्रेट है, ये सब किरदारों के जो ये घर में रह रहे हैं. And so that I was very clear. And then I thought कि I love the word गुलमोहर, क्योंकि एक बहुत दिल्ली वाली फील है. बिकॉज दिल्ली में जब आप जाते हो तो गुलमोहर के पेड़ दोनों तरफ रहते हैं. एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल एंड इट्स वेरी पोएटिक द वर्ड. एंड एक अजीब किस्म की मिस्ट्री भी है इस शब्द में. तो वी थॉट इट वाज वेरी नाइस टू नेम द हाउस गुलमोहर. एंड क्योंकि मुझे चाहिए था कि ये फिल्म एक पोर्ट्रेट हो ये सब लोगों की जो ये घर में रह रहे. एंड वी सेड कि लेट्स नेम द फिल्म, लेट्स गिव द टाइटल ऑफ द फिल्म द नेम ऑफ द हाउस व्हिच इज गुलमोहर. दैट्स हाउ वी गॉट टू द नेम गुलमोहर. ग्रेट. क्योंकि नाम भी ऐसा है ना कि नाम के वजह से भी एक पुल आता है गुलमोहर सुन के कि आई वाज अट्रैक्टेड टू द नेम कि वो फिल्म या देखने. या it's a very nice poetic name. It reminds you of Gulzar Saab songs. And there's some थोड़ी nostalgia वाली feeling भी होती है ना गुलमोहर में. हाँ. uh, so that, and also now people जब अभी लोगों ने देखी है film, so they also come up with their own meanings. So there was something very nice that people said that the Gulmohar tree comes in a particular season, and all the flower, it's not that the flowers bloom through the year, they only bloom in a particular season, और फिर वो सब गिर जाते हैं. पर जब गिरते हैं तभी भी बहुत खूबसूरत लगता है. और फिर आप याद करते हो, और फिर by the time it's over, the year ends, and then again the flowers. And that's really how all of us are. So this I never thought so deeply. This is all audience who are now thinking and putting on Instagram and Twitter, and so it's nice to see how the film is connected to everybody. So now shall open to the audience. Great. Everyone. Very excited. Questions? Hello, good evening, sir. Hello. क्या नाम है आपका? Sir, I have मेरा नाम मनवीर. मनवीर. Okay. Hi. हाँ, हाँ, 2 क्वेश्चन है मेरे. पहला क्वेश्चन है कि जैसे अमोल पालेकर या फिर जो शर्मिला टैगोर है, वो सिनेमा में बहुत टाइम बाद हमें दिख रहे हैं, और ऐसे एक्टर्स जो अभी काम कर रहे हैं, ऐसी मूवीज ज्यादा देखने नहीं मिलती जिसमें दोनों टाइप के एक्टर्स आपको साथ में डायरेक्ट करने में आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? पहला क्वेश्चन तो ये. और सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो आखिरी डायलॉग था अमोल पालेकर और शर्मिला टैगोर के बीच, उसमें इंक्रीजिंगली मेरे को ऐसी फील आई कि अमोल पालेकर को एज अ विलन लेबल कर दिया गया है. आपने अभी भी मेंशन किया था रियलिज्म के बारे में, ह्यूमन ड्रामा की रियलिज्म के बारे में. तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई मतलब क्योंकि वो भी बहुत बिटर लाइफ एक्सपीरियंसेस देखते हुए आए थे, जैसे उनके Of नैरेटिव course. में बताया गया जी. अमोल पालेकर के, जी. तो उनको विलन मेरे को ऐसी सेंस आई, मैं गलत भी परसेप्शन हो सकता है मेरा, पर क्या वो सही है करना, या क्या आपका इंटेंशन था वो करना कि वो मेरा ही परसेप्शन था सिर्फ? और हाँ, बस. नहीं, तो मैं आपको दूसरा क्वेश्चन पहले आंसर करूंगा. जो विलन आप कह रहे हो अमरीत, क्या होता है मेरे हिसाब से, especially when you're doing a human drama which is so deeply invested in its characters. जो सुधाकर का कैरेक्टर है, सुधाकर had his reasons कि मैंने आईएएस को छोड़ दिया था, मैंने अपनी फैमिली को जोड़ के रखा था, मैंने तुम्हारी परवरिश की. बट एट द सेम टाइम मेरा ऐसा मानना है इन लाइफ दैट बिकॉज आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, आई डोंट होल्ड टू मेनी ग्रजेस पर्सनली. तो पर मेरी फैमिली में और बाकियों की फैमिली में ऐसे बहुत लोग हैं जो ग्रजेस को पकड़ के रखते हैं.
तो मेरा इट वाज मोर अ क्वेश्चन कि क्या ऐसे लोग कभी भी चेंज हो पाएंगे। एंड ज्यादा तौर से मैंने ऐसा देखा है कि जो लोग बहुत सालों तक, बहुत वक्त तक जब ग्राजेस को पकड़ के रखते हैं, इट्स वेरी हार्ड टू चेंज। तो आई फेल्ट, हमने बहुत डिस्कस किया, इनफैक्ट एक ऐसा भी मोमेंट था जब सुधाकर शुड सुधाकर बर्न द फाइल, जो विल की फाइल है, शुड ही बर्न इट इन द बर्न फाइल, but it was not seeming right at all. Then it was seeming as if कि जस्ट हम कैरेक्टर को दिखा रहे हैं कि सब अच्छा ही होता है एंड में। बट एट द सेम टाइम आई डोंट थिंक, मैं जिस जिस तरीके से मैं सुधाकर को देखता हूँ, मैं उसके विलन के तौर पे बिल्कुल नहीं देखता हूँ। बिकॉज आई फील सुधाकर इज ट्रीटेड विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, कि वो अपने जो वो बिलीव करता है वो उस पर स्टैंड करता है। कि अगर उसे लगता है कि ये औरत ने मेरी फैमिली को तोड़ा है, I agree with him that yes, maybe the Kusum has broken the family, but does that mean that he treats the son so inhumanly? That's, for me, it's a big no. But for Sudhakar, it is a yes. And you have to accept such people also in your to be a part of it, to be a part of your life. Now, whether you choose to be with them or not, that's your ultimate choice. तो वो मैं कोशिश कर रहा था दिखाने के लिए। तो मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि उसे विलन के तौर पे दिखाऊं, पर मैंने सोचा कि ऐसे लोग हैं लाइफ में, हमारी जिंदगी में भी ऐसे लोग हैं, वो कभी बदलने नहीं वाले। अगर बदल जाएंगे तो अच्छी बात है, अगर बदल जाए तो। मगर अगर नहीं बदले, दैट इज ऑल्सो फाइन। देन यू चूज कि अगर आप उनके साथ रहना है कि नहीं रहना है। इसलिए जो लास्ट में जो मैंने कोट लिखा था, फॉर द होम्स दैट वी बिल्ड एंड द फैमिलीज दैट वी चूज, तो मैं ऐसा एक बहुत मानता हूँ कि एक तो आप फैमिली में पैदा होते हो, वो सब ठीक है, मगर जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आपकी फैमिली भी बढ़ती है। जैसे आप फ्रेंड्स बनाते हो, आपके वर्क कॉलीग्स होते हैं, तो आप अपनी फैमिली खुद बनाते हो, और वो चॉइस आपका खुद का है। एंड दैट इज व्हाट आई वाज एक्सप्लोरिंग इन टर्म्स ऑफ सुधाकर्स कैरेक्टर एंड एवरी अदर कैरेक्टर, कि आप चूज करो। एंड एज फार, आई होप आई आंसर द सेकंड क्वेश्चन, बट द फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे मुझे तो बड़ा मजा आया अमोल जी और शर्मिला जी को के साथ काम करते हुए। तो शर्मिला जी जो थी, वो सबसे पहली एक्ट्रेस थी जिसे जिनके पास मैं गया था स्क्रिप्ट के साथ। क्योंकि जब मैंने ये स्क्रिप्ट को लिखा था, तभी आई ऑलवेज हैड शर्मिला जी इन माइंड फॉर कुसुम। एंड मैंने बहुत सारे उनके इंटरव्यूज देखे, बहुत सारी फिल्में देखी उनकी over the years, just to see how she speaks the dialogues, because she has a particular style of speaking as well. And I'm pretty sure that that helped me in the dialogue writing process as well, to imagine कि अच्छा, अगर शर्मिला टैगोर बोल रही है तो ऐसे बोलेंगी। बट सबसे मुझे वो तो एक बार स्क्रिप्ट खत्म हो गया, देन आई वेंट टू हर एंड शी अग्रीड टू डू द फिल्म, एंड आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दैट। बट द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट फॉर मी वाज जब वो ऑन बोर्ड आई, और जब प्री प्रोडक्शन हो रहा था, तो फिल्म शूट के लगभग 2 या 3 हफ्ते पहले, जब हम वर्कशॉप्स कर रहे थे, जब रीडिंग्स कर रहे थे, हमने 1-on-1 रीडिंग्स किए थे, तो वी वुड रीड द स्क्रिप्ट फॉर लाइक एवरी सीन ऑफ अस, 1-on-1, एंड वी वुड ट्वीक द डायलॉग्स कि अच्छा, ये शब्द जो है वो जब बोलेंगी तो शायद उतना सिनेमैटिकली नहीं लैंड होगा। एंड दैट प्रोसेस वाज वेरी नाइस, बिकॉज she respects जो she's so talented. I mean, she's been working for over 60 years, but she respects the script so much कि उन्हें ये अंदाजा है कि अच्छा, ये शब्द जब मैं बोलूंगी ना, वो वैसे नहीं होगा, मगर अगर इसे ट्वीक करके ये मैं कहूँ, तो वही सेम मीनिंग होगा, but it will land better when she says it. तो वो प्रोसेस जो है, जब एक्टर्स स्क्रिप्ट को इतना सीरियसली लेते हैं कि स्क्रिप्ट इज रियली लाइक गॉड, वो बड़ा मजेदार था। And same with Amolji also. And Amolji to filmmaker bhi hai. He's directed some of the best films of our country. But it was a very collaborative and very interesting process, because we developed the character very well. And I was also very clear to him कि मुझे सुधाकर को कभी भी एक विलन के तौर पे नहीं दिखाना है। Yes, फैमिली जो है वो मजाक उड़ाती है सुधाकर का, बोलती है अच्छा, ये खड़ूस संतान आ गया है, दिस दैट दैट, बट वो सब हम सब करते हैं। और वो ऐसा नहीं कि वो विलन है, वो बस ही हैज अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अलग है। तो अभी चूज उन्हें नहीं करना है, मुझे करना है कि मैं उन्हें अपने साथ रखूं कि नहीं रखूं। एंड दैट कम्स फ्रॉम माय ओन प्रिंसिपल फिलोसफीज ऑफ लाइफ। सो या, एक एक क्रॉस क्वेश्चन बस जी छोटा जी, सा। बोलिए, पूछे। हाँ, सुधाकर से रिलेटेड,
वो जो कैरेक्टर है, आपने बहुत सारे कैरेक्टर के साथ ये दिखाया, जैसे जो मैं मनोज बाजपेयी, अरुण, हाँ अरुण के जो बेटे हैं, आदि। उनके साथ आपने दिखाया कि वो पीपल उनको रीच आउट हो रहे हैं, मतलब जैसे फैमिली में लोग उनके सपोर्टिव है जनरली, ज्यादातर, उनके फादर की बात नहीं कर रहा मैं, पर वैसे ही क्या हम सुधाकर के साथ वैसे नहीं दिखा सकते थे? मुझे पता है आपने कहा कि आप ऐसा मानते हैं कि वैसे लोग ज्यादातर लाइफ में चेंज नहीं होते, और शायद तक इस कारण से वो आर्क वैसा नहीं गया सुधाकर के लिए, पर मतलब ज्यादा लोगों को रीच आउट करके उनको उनको समझ के मतलब ऐसा नहीं दिखेगी। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप देखें तो सुधाकर के जो पोते हैं किशोर, ही हैज अ वेरी गुड रिलेशन विथ हिज हाँ ग्रैंडफादर. इट चेंजेस इवेंचुअली. हाँ हाँ ऑल्सो हाँ हाँ अगर आप अभी अगर आप सोचे तो सुधाकर इज इन हिज 70s. उसके जो बच्चे हैं कमल, ही इज अबाउट 50 years old. तो 50 साल से वो अपने बाप को ऐसे ही देखते हुए आ रहे हैं कि माय फादर इज लाइक दिस. वो इनफैक्ट एक सीन भी है कि जब कमल अरुण को बोलता है फोन पे कि आज नीना भी कह रही थी कि मेरे फादर है, इससे आप बेयर कर लेते हो इन्हें, वरना वी ऑल नो दैट ही इज वेरी डिफिकल्ट. तो लोग जानते हैं कि ही इज डिफिकल्ट, बट दे आर स्टिल विथ हिम. इट्स नॉट लाइक दे आर अपोजिंग हिम. तो वो रिस्पेक्ट भी है कि ये हमारे बुजुर्ग है और हम है. बट मैं वही कह रहा हूँ कि दो लोग में अगर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, या तो आप झगड़ा करते रहो, या फिर एक्सेप्ट करो और चूज कर लो कि अच्छा ये नहीं बदलने वाला, पर ये फैमिली है और ये हमारे साथ है, तो आप चूज करो कि आपको अपने आप को कैसे कंडक्ट करना है इनके सामने. तो इसीलिए वो आखिर में जो सीन भी है शर्मिला जी और अमोल का, जो कुसुम और सुधाकर का सीन है, द ट्रीटमेंट दैट वी सेड इज, वो शर्मिला जी एंड आई सेड दैट वी विल नॉट शाउट एट ऑल. आप बहुत ही काम तरीके से, आपको जो कहना है आप उन्हें कहेंगी. आपको उन पे चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है. कुसुम विल नॉट शाउट एट सुधाकर एट ऑल, बिकॉज शी हैज, इफ शी हैड टू शाउट शी वुड हैव डन इट 50 years ago. अभी करके कोई फायदा है नहीं. ऐसा मेरा मानना था एज अ राइटर एंड एज अ डायरेक्टर. तो मैं ऐसा वही, आई आई नेवर सॉ हिम एज अरे ये बुरा आदमी है, कोई नहीं बात करेगा इससे. ऐसा नहीं होता है लाइफ में, इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है लाइफ में. बिकॉज जैसे कि आपने आपने देखा कि सुधाकर के अपने रीजंस है, and that has left you. So I'm guessing the character that has reached out the most to you, spoken the most to you, is Sudhakar. कि आप और जानना चाहते हो उनके उनके बारे में. So that speaks a lot about who he is. थैंक यू वेरी मच। All right, thank you. Hello. Hello, Rahul. Hello, Hello. Ajay, and hello, Vishwanath. Okay. So I love the movie, and Thank you. I could relate so much to the movie because recently we also shifted from a big house, and it was just before Holi, and Holi was our last festival, like this Holi itself. So that was Wow. one very big connection that relates so much with Indu. Uh, I was like, I used to feel like that because I am daughter-in-law, I'm the only daughter-in-law, and my mother-in-law is there, and all the things like, I feel most of the Indian families, and even it's documented, Yeah, yeah, like 90% of the Indian families are dysfunctional. So there are all these elements in every family, and you will not be sure कि किस family में क्या combination मिलेगा. So I could find that the movie was really very raw. It was thank you. even the Sudhakar's character. There, I think that kind of character by far and large हर एक family में होता है. हर family में Who होता is है. very Yeah, staunch, would yeah, stick to his yeah, yeah. right. So that was one thing, and like I just wanted to congratulate Thank for you. you the movie. I don't have any questions. I am really happy with it. Very nice. Thank Good you work. so much. I'm relieved. Thank Thank you. thank. Thank you. I could so much relate to the movie, so I had to say Thank you because so the much. timeline was same exactly. Yes. Thanks. Thank you. Hello. Hi. First of all, congratulations for the. Thank you. First of all, congratulations for Thank you so and much. loved your work. Loved your work. The genre which you picked, the writing which you picked is so different from the action films and all, and the current Bollywood one which is going on.
but it was so much beautifully presented, and the fights and all the cinematography was very nice. The fights which started from the Thank you. hall, and that all the Yeah, fuss of packaging and all, that was very nice. thank you. Thank you so So much. just my one question is, what is the motivation of picking such genres or such classic movies? I mean, I don't. It's too. First of all, it's too early to call it a classic or a thing. But I think the most. But thank you for it. But the most. I think it's again comes back to what I told first. It's the sensibility. क्योंकि my DOP Ishit Narayan and I, we are very close collaborators. ये हमारी चौथी फिल्म है साथ में काम करते हुए. And we like a particular style of presenting stories. और मैं ऐसा बहुत मानता हूँ कि मेरे जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो मैं कहता हूँ कि मेरा डीओपी और मेरी जो एडिटर और हम तीनों ने बहुत काम किया है एक दूसरे के साथ. इट्स द वे वी लाइक टू प्रेजेंट आवर स्टोरीज and the kind of storytelling that we are attracted to, and that's this film is nothing but a reflection of that. Sorry, I'm not sure if I got stuck. All good. Can you guys hear him? Hello. Hello. It's actually raining here. Yeah, we can. It's getting lagged or something, huh? Yeah, it's raining over there. So the internet connection. All right, guys, did you hear him? Also, we have Rahul till like I think for 13 more minutes. So final questions. No, we can speak for half an hour. Huh. Yeah. So, All right. So we can take more questions. yeah. So to answer your question, I think it's just the We can hear sensibility you. here. It's really the sensibility. और मेरे जो DOP और editor दोनों जो हैं, this is our fourth project together. So Gulmohar is nothing but a reflection of the kind of storytelling that we like. And also the genre, as you said, it's a family drama, but I call it a human drama really because it's about all these characters. So we wanted to tell the story in this style. I think that's what spoke to us the most. सर फ्यूचर में कोई और भी फिल्म्स बना रहे हैं क्या ऐसी? यार ये तो बन गई अभी. आई होप आई डोंट रिपीट माई सेल्फ. आई होप कुछ मैं अपने आप को भी चैलेंज करूं. ये तो बन गई अभी. Yeah. But I hope you make those prequels, sequels, and musicals of this. Gulmohar. Oh wow. Yeah, if someone let's see. Yeah. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Hello, sir. Hi. So my name is Pragyan. Hi Pragyan. And first of all, sir, बहुत ही amazing movie थी. Thank And you. I want to know कि sir हर एक individual की, चाहे वो एक फिल्म मेकर हो या कोई वो एक ऑडियंस की तरह वो मूवी देख रहा हो, तो उसका एक हर जॉनर में एक ज्यादा इंटरेस्ट होता है, चाहे वो कोई एक्शन मूवी हो सकती है या हॉरर थ्रिलर एनीथिंग. सो पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि विच इज योर फेवरेट जॉनर, जो मैं यूजुअली हर किसी से पूछता हूँ. Right. My favorite genre is drama. इस फिल्म, Sorry, हाँ. ओके, I love human dramas. I इस love. फिल्म में एक, हाँ जी पूछिए पूछिए. प्लीज कंटिन्यू सर. सर इस फिल्म में एक सीन था जब अरुण अपने बायोलॉजिकल फादर से मिलने जाता है, एंड वहां पे उसके फादर उसको कहते हैं कि बच्चों को मैं अपने बच्चे की खुशी हमेशा ऐसे विश करता था, एंड वेयर अरुण रिप्लाइज कि बच्चों को खुशियां दी जाती है. सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कितना ऐसा बिलीव करते कि दो लोगों जैसे अरुण और उसके फादर में अनबन होती थी, सॉरी आदित्य एंड उनके फादर में अरुण में अनबन होती थी, वो एक दूसरे के से उतनी ज्यादा चीजें शेयर करते नहीं थे. सो डू यू थिंक कि फाइनेंशियल कंडीशन से ज्यादा, क्योंकि अगर अरुण के फादर अगर फाइनेंशियल स्टेबल होते तो ऑब्वियसली वो अपने बेटे को ऐसे छोड़ते नहीं किसी हॉस्पिटल के पार्किंग में. सो
जी, हॉस्पिटल के इसमें। जी सॉरी Okay, go And, on. Yeah. वीडियो ऑफ कर देते हैं, है ना? हाँ, आर वी ऑडिबल नाउ? या you're audible. Harshal, no. Harshal ने वीडियो ऑफ कर दिया है. Did you switch on the video, Harshal? अच्छा, Harshal क्या कर यहाँ रहा है? नेटवर्क इश्यूज है ना, उसके लिए मैंने वीडियो ऑफ कर दिया. बारिश हो रही है. हाँ. But I think it doesn't matter. 18 Like seconds. either way, just switch on the video, buddy. चला देता हूँ, नहीं चला देता हूँ. This feels like a family drama. All right, carry on. The opening scene of the film. कर रहा हूँ. अरे कर रहा हूँ ना, मेरा क्या कभी से. I think it's pretty clear here, and if it's lagging, then we'll hear it in a second. I think they're connecting to the hotspot or something. Yeah, there's a problem with the Wi-Fi over there. Like it's Yeah. waiting for- Till they join, Rahul, I wanted to ask you कि like this was your first narrative feature film, so इसके इतने अलग अलग प्रोसेस होता है, पता नहीं कब से लिख रहे थे साथ में. आप बता रहे हो कि आप दिल्ली 10 साल से जा रहे हो. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई लव्ड व्हेन यू सेड कि दिल्ली, you love Delhi visually, you emphasized on the word visually, because I was like okay, because Delhi का थोड़ा सा in general अलग चीजें होती हैं. तो ये आप बहुत टाइम से लिख रहे होगे या फिर इस मटेरियल के आसपास, मतलब you were around this material but you found this. तो एक तो प्रोसेस भी बहुत लंबा हो जाता है, फ्रॉम वन यू गेट, मतलब आइडिया आता है उसके इंसेप्शन से लेके यू डू प्रिपरेशंस, यू डू शूटिंग, एवरीथिंग First you write the script. हाँ, मतलब फर्स्ट यू राइट द स्क्रिप्ट, मतलब वो पूरा आइडिएशन टू लाइक दैट फिनिश प्रोडक्ट. एक तो कितना टाइम लग गया, एंड देन ऑल्सो कि हाउ वाज द प्रोसेस, एंड लाइक एक प्री में एक अलग देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी. व्हेन यू गो ऑन शूट, there's a different kind of energy all over there. So how were you navigate, even though you are not somebody who is just entering the industry, you have been around, how was that for you, navigating through all those stages, as a first, even though it like same thing, it wasn't your first I got your point. But so वो कैसा experience था आपके लिए? So I think what helped me the most, Vishwadhar, is that I was also producing this stuff. So because the starting में क्या हो रहा था, when I got this idea, it was in 2018. And 2018 में क्या हो रहा था कि मेरे पास एक दूसरी स्क्रिप्ट थी एक्चुअली, जो मैं काफी एक्टर्स के पास लेके गया था. It was fully financed. Meera was supposed to produce it along with me, and we were financed, but कोई एक्टर उसे करने को तैयार नहीं था, because this was pre-OTT, मतलब OTT just आया था शायद in India, and it was a 2-hero film, and for some reason no actor wanted to play a 2-hero film. तो मैं एक दिन वापस घर पे आया था, 2018 या 2019 की बात है, I can't remember now. 2019 है शायद, सॉरी. एंड मैं बहुत काफी डाउन था, एंड देन माय वाइफ हैड टोल्ड मी दैट यू शुड, कहाँ इतनी कॉम्प्लिकेटेड फिल्म्स लिख रहे हो, राइट अ फैमिली फिल्म, because that's what really sells. And then she said something like, but you may not be able to write one. She literally challenged me, और मैंने वो चैलेंज लिया, and then I said कि what the hell, I'm going to write a family film and show it to you. That's really the inception of this, कि ये आइडिया कैसे है कि एक फैमिली फिल्म बनाए. फिर जैसे मैं कह रहा था कि फैमिली फिल्म जब लिखनी थी, देन माय सेंसिबिलिटी केम इन कि अच्छा ओके, एक लीनियर फैमिली, तो लीनियर स्टोरी टेलिंग समहाउ डजंट अट्रैक्ट मी एट ऑल. आई लव टू हैव मोर लेयर्स एंड stories, even when I see it. I love it. I love to play around with characters, what they're thinking, and multiple storylines या timelines. मुझे ऐसी फिल्में और अट्रैक्ट करती है. तो हमने लिखना, and then अर्पिता और मैं काफी क्लोज कोलैबोरेटर्स हैं, तो we started writing. But because I was also producing it, मुझे कभी भी ऐसा
ऑफ कोर्स प्रेशर फील होता है, बिकॉज you're just speaking about writing a script लिखने के बाद you have to find the finance for it, एंड फाइनेंस फाइंड करने के लिए यूल गो टू 30 पीपल एंड शायद एक बंदा आपको बोले कि हाँ चलो ये बनाते हैं, बट फाइनेंस वाले भी आपको पूछेंगे कि अच्छा कास्ट क्या है, और कास्ट आपसे पूछेगा कि अच्छा कौन प्रोड्यूस फाइनेंस कर रहा है, बिकॉज दे ऑल्सो नीड टू गेट देयर मनी. So you have to play, you have to juggle all these games. But because I was producing and my core experience for the last 12 years has been producing, I could juggle that. कि मैंने, I could speak with the financiers and I could speak with the cast and I could speak with my HODs, जैसे इशित हो गया मेरे DOP. I was building my team all simultaneously. पर ये सब जब हुआ, I cast शर्मिला जी, I cast मनोज जी, I cast सिमरन, I cast सूरज, all in 2019. और फिर 2020 में कोविड हुआ, तो फुल 2020 we could not shoot. तो फिर 2021 में हमने रिज्यूम किया जब शर्मिला, एंड आई एम सो थैंकफुल टू दीज 4 पीपल, क्योंकि उन्होंने they believed in the script, they believed in me, so that gives you the courage to still keep going forward. और जब 2020 में हम बनाने वाला था, तभी the finances were totally different. It was supposed to be a theatrical film. It was supposed, because तभी तो nobody really thought कि films directly OTT में जाएंगे. It all happened during COVID really. ऐसे इतने में देन 2021 में जब हमने प्रिपरेशन शुरू की, तभी क्या हुआ कि वो सेकंड वेव आया, फिर थर्ड वेव आया, और फिर मनोज जी के इतने सारे प्रोजेक्ट्स बैकलॉग में थे कि वी केप्ट गेटिंग पुश. फिर फाइनली हमने 2022 मार्च में शूटिंग की. तभी भी अजय जब काम कर रहा था, ही वुड रिमेम्बर कि हम एक पूरा सेट बना रहे थे, ये कि घर पूरा हम सेट में बनाएंगे बॉम्बे में. 4 weeks before the shoot we had to change everything and we had to find a location in Delhi because of various reasons. तो जो हमने इतना प्रिपरेशन किया था कि अच्छा सेट में शूट करेंगे, ऐसे कैमरा बूम करेंगे और ये वो all that had to be thrown out and we had to rethink everything in a live location, which for me personally बहुत अच्छा लगा, क्योंकि I come from that school कि live locations then I feel at home. अगर सेट में है मुझे बहुत घबराहट होती है to be honest, because I don't know कि अगर लाइव लोकेशन में क्या है कि मैं बोलूंगा कि अच्छा कैमरा you can take it wherever you want. But set में क्या है कि you only have 3 sides really, because one side you can't reveal the other Correct. people. So again, what I said, meant to be wala, I didn't realize, but it happened very organically for our film also. It was meant to be that अच्छा ठीक है, 4 साल, अभी 3 साल कोविड के लिए हमने कुछ नहीं कर पाया, बट जब किया तभी everyone came in with full energy कि चलो थर्ड वेव हो गया, now we can make it very nicely. एंड इट वाज सच अ ब्लेसिंग कि हमने पूरा दिल्ली में शूटिंग की, पूरी फिल्म की शूटिंग. बिकॉज क्या होता है कि पूरी कास्ट जब एक साथ इकट्ठे आउटडोर में है, तो एनर्जी इज टोटली डिफरेंट, कि आप घर नहीं जा रहे हो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है कि ये सोशल एंगेजमेंट है या वो सोशल एंगेजमेंट है, नथिंग. वी ऑल मेड इट लाइक अ फैमिली. एंड आप कह रहे हो, मतलब आफ्टर द फिल्म गॉट शॉट इन, एक्चुअली टुडे 22nd April last year was our last day of shoot. Oh wow. Our last shot we took on 22nd April last year. And so तब से लेकर अभी March 3rd this year we released. But अभी भी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, मेरी और मेरी टीम का काम. Because now we have to still keep pushing it ताकि लोग देखें. And ना सिर्फ इधर, but even अमेरिका में देखे, UK में देखे, because OTT gives us that advantage कि the world is your market. So the work with a film never gets over. यस, इमोशनली थोड़ा डिटैचमेंट हो जाता है कि अच्छा जो क्रिएटिवली मैं करना चाह रहा था वो मैंने जितना मुझे देना था वो मैंने दिया, बट उसके बाद यू हैव टू पुट ऑन योर प्रोड्यूसर दिमाग कि अच्छा इसको कहाँ कहाँ पर और दिखाएं ताकि आउटरीच और ज्यादा. I think this is something that we need to learn from you, like how after a project has been like completed, yeah like a role of a producer, what exactly is, मतलब सिर्फ finance या पैसे लेके आना का, it's not just that, it's like bigger it's than not that. It's much bigger than that. And also, I also feel it's very important for directors to think like producers or think from the producer's point of view. Because it's very easy to criticize the money bags कि जो पैसे डाल रहे हैं और जिनको stars चाहिए, हम कहते हैं अरे आपको तो सिर्फ stars ही चाहिए and this and that. But you also have to think कि do you watch films that don't have a known face? You would, but शायद 2-3 साल बाद आप देखोगे कि अरे यार ये इतनी अच्छी फिल्म है पर हमने देखी नहीं, इसको मार्केटिंग नहीं की. अरे भैया कैसे करोगे, क्योंकि रिटर्न ऑन इट्स लाइक एनी बिजनेस, यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी, यू हैव टू गेट बैक योर रिटर्न. बट इन द प्रोसेस आई थिंक व्हाट वी डिड वेरी ब्यूटीफुली विद गुलमोहर इज हमने वो बैलेंस अच्छे से किया कि अगर एक शर्मिला जी और मनोज है, तो सिमरन भी है जो साउथ में बहुत ह्यूज स्टार है,
सूरज भी है जो यहाँ पर उतना काम नहीं किया उसने, मगर वेस्ट में बहुत सारा काम किया है. बट एट द सेम टाइम वी हैव दीज न्यू कमर्स एज वेल हु आर गेटिंग अ प्लेटफॉर्म विद ऑल दीज वेटरन्स. So that Kaveri was balancing, there. Kaveri was there, Utsavi is there, Jatin, who's done a lot of work, but getting देखो शांति जो रेशमा प्ले कर रही है उसकी पहली हिंदी फिल्म है. जो परमहंस प्ले कर रहा है उसका पहला फिल्म है, because he's done only OTT shows. तो that balancing I think is very important as directors and producers. But yeah, the work never ends. अभी भी मैं अभी 2 हफ्ते में I was telling Ajay I'm going to the US. I have to keep pushing it out there कि और लोग उधर भी देखें, क्योंकि हुलू पे भी है वहां पर. तो Oh, nice. the film is released on Hulu, so we have to push it in America. Because see, मैं ऐसा मानता हूँ, again, because I'm a producer as well, you don't make films for your drawing room. क्योंकि आप अपने family और friends को दिखाएं, then it's a different approach. Agreed. Yeah. फिर आप अपने पैसे डाल के करो. But if I'm getting someone else's money and I'm making a film, it is my responsibility to make it, to have it shown to as many people as possible. Agreed. Yeah. And if I may, just one more Yeah. question, and then over to you guys. This जो Manoj जी का character था, he was dealing with a lot of Anxiety and issues with his anxiety, but also issues with his dad and everything. And just before shooting, also in his real life, he lost his father. yes. So how was that? मतलब for you being a director to direct Manoj Bajpayee, something which he has personally experienced. वो कुछ was there anything over there कि you were a little taken aback कि how will things happen, or just how was that? Yeah, so the thing with Manoj and I, we know each other very well for many, many years now. And we're very good friends. But I never, nor did he ever bring up this whole incident ever, that his father passed away. His father passed away in October, right, in October 2021. We shot in March 2022. But मैं in general ऐसा I like to speak a lot with my actors, give them that atmosphere and वो zone में लेके जाओ. पर मैं कभी भी इतना personal मैं कभी नहीं जाता. Because for me it's very important for them to draw out. मैं बस उन्हें ये मेरी कोशिश रहती है कि ये कैरेक्टर जो अरुण है या सुधाकर है या कुसुम है, वो क्या सोच रहे हैं. फिर इट्स द एक्टर्स जॉब रियली कि अपने लाइफ से ले या अपने फ्रेंड के लाइफ से ले या फिर कैरेक्टर को इतना इमेजिन करके आप ड्रॉ करें. दैट्स देयर जॉब. My job is really just to take them till that point where the character is in the script and what he or she is feeling. That's my job, I feel. Okay. Okay, thank you. And over to people in Raipur. जी सॉरी, आपको अपना क्वेश्चन जरा एक बार राहुल, वापस यहाँ का- बताना. पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन कि आपका हर एक डायरेक्टर का, हर एक फिल्म मेकर का एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है. सो आई वांट टू नो कि आप अपने आप को आफ्टर 10 इयर्स या 15 इयर्स टाइम्स आप किस तरीके की फिल्में बनाते हुए देखते हैं अभी से. एंड दूसरा कि कितना मुश्किल होता है, क्योंकि इस फिल्म में बहुत सारी ऐसी सीन्स है जो काफी ज्यादा डीप मीनिंग रखते हैं. सो कितना मुश्किल होता है कि हर एक कैरेक्टर का अलग अलग आइडियोलॉजी होना. सो ये जानना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी फॉर मी टू आंसर, क्योंकि मैं इतना नहीं सोचता हूँ 10 साल बाद 15 साल बाद मैं क्या करूंगा, बिकॉज यू रियली डोंट नो. अभी हमने थोड़ी ना सोचा था 2020 में पूरा द होल वर्ल्ड विल स्टॉप. हमने नहीं सोचा था. तो यू कांट प्लान सो मच कि ये मैं करूंगा वो मैं करूंगा. एटलीस्ट मैं नहीं सोचता हूँ उतना. व्हाट आई फील अभी, फॉर एग्जांपल अभी मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या कर रहा हूँ, इट्स रियली व्हाट अट्रैक्ट्स मी द मोस्ट. एंड द मोर आई थिंक अबाउट माई सेल्फ, जो फेज ऑफ लाइफ में मैं हूँ, लाइक गुलमोहर ऐसे फेज में आया जब मैं खुद एक पेरेंट बनने वाला था. तो माई वाइफ एंड आई जस्ट बिकेम प्रेग्नेंट. हमें घर खरीदना था, तो मैं उस जोन में था कि चलो फैमिली शुरू हो रही है, घर में खरीदने वाला हूँ, तो लेट्स एक्सप्लोर व्हाट द मीनिंग ऑफ दैट इज. बट आई डोंट थिंक सो मच कि 10 साल बाद मैं क्या बनूंगा, ड्रीम प्रोजेक्ट. फॉर मी गुलमोहर इज अ ड्रीम प्रोजेक्ट बिकॉज आई वांटेड टू मेक इट इन माय ओन स्टाइल. कि मुझे चाहिए था कि मैं शर्मिला जी के साथ काम करूं. मुझे चाहिए था कि मैं मनोज जी को ऐसे पोर्ट्रे करूं जो जुबैदा के बाद किसी ने पोर्ट्रे नहीं किया है उन्हें, इन एन अपर
rich strata. He's always usually seen as a cop or a gangster or a spy or a terrorist. But I wanted to see him as as this rich man who's got a lot of issues, who's dealing with a lot of issues within himself. And also ये जो हमने richness भी दिखाया, it's not like rich are villains कि आपके पास पैसे है तो बहुत पैसा, it's not bad to have money, it's fine, it's good to have money, but how you deal with your own problems is beyond money. वो मैं सोचता हूँ. The other question जो आप पूछ रहे थे कि ideologies of different characters, I don't know, because मुझे ऐसा लगता है at some point each character is a reflection जो आप अपने आप में सोचते हो या आपने जो ऑब्जर्व किया है वही आप डालते हो अपने किरदारों में. So each character has some part of me or Arpita in it, I think. And or we've seen such characters in our lives. जैसे सुधाकर, I have such people in my family, or I've seen such people in my friend's family. आदि अरुण का जो रिलेशन है, that वो फादर सन का जो तनाव होता है वो हर फादर सन में होता है, कोई भी जनरेशन में हो, क्योंकि वो एक्चुअली जो दो मर्द है उनके बीच की ईगो है और कुछ नहीं. कि एक यंग बंदा cannot accept that I'm now a man, that's what the son feels, and the father cannot accept that there's someone who is not willing to accept कि I know more. So those kind of things are just again, they're just observations around us, and जो हम में है वही हम अपने किरदारों में डालते हैं, I feel. So it's not कि हर character को different ideology देनी चाहिए, but it's more about how do you find the nuances in each character, कि उनकी क्या कहानी. It's more about that, I think. Thank you, sir. Thank you. So much. Okay. Hi, Rohan. Rahul. Hello. So I'm bad at names. Sorry. No, it's Hi, okay. I've Rahul. got a lot of Rohan. Hi. How are you? I'm very well, thanks. Yeah. Okay. I don't have a question, but I have things to say. First of all, thanks for making this film, and two reasons. क्योंकि first reason कि this film is about Holi. ठीक है. और मैंने जैसे बहुत टाइम से बात कर रहा था कि I want to make a film about Holi. क्योंकि हम लोग वेस्टर्न सिनेमा में देखे या यहाँ पर देखे, ठीक है, there are lot of films about Christmas, ठीक है, डाई हार्ड है या वो हर हफ्ते फिल्म रिलीज होती है उनकी, बट होली, हाँ, होली हैज बीन माय फेवरेट फेस्टिवल, मतलब फेवरेट फेस्टिवल ऑल टाइम, बट कभी भी उसका एक अच्छे से पोर्ट्रेयल हुआ नहीं है. मतलब अच्छे से पोर्ट्रेयल मतलब एक पूरी प्रॉपर फिल्म बेस्ड नहीं ऑन होली, मतलब गाने हैं होली के दिन बट एक प्रॉपर फिल्म बेस्ड नहीं है. तो थैंक्स फॉर मेकिंग दिस फिल्म. थैंक्स, मतलब आपने मुझे बीट कर दिया होली फिल्म बनाने के लिए, बट हाँ, बनाओ यार, एक और फिल्म बनाओ होली पे. थैंक्स. इट्स सच अ ब्यूटीफुल फेस्टिवल. सेकंड चीज, हाँ, यप, हाँ है तो. सो और थैंक यू फॉर कास्टिंग सिमरन. मतलब आई वाज डाइंग टू सी हर इन अ हिंदी फिल्म. So yeah, thanks for casting. No, thanks. Yeah. मुझे याद है उनकी लास्ट हिंदी फिल्म थी तेरे मेरे सपने, if I'm not wrong. So right. Yeah, and I think she's done थोड़े और Hindi films, but she's so good. She's so good. हाँ, she's and thanks for giving Amol Palekar a negative role. So yeah, that's it. अच्छा, I don't think I don't think anyone to say this, but I'm nobody to say this, but what I liked about this film, it's not a very unique concept. This film is about a home, a place, and people falling apart. Yeah. So this is not a very new subject. But right. What was special about this was your vision. How delicately you handled this topic. So that was really special, and I loved it. I cried a few times. Thank you. So yeah, I don't know. Maybe I'm not able to say this. I'm a 21-year-old guy, so I'm not able to say this. No, but you're the audience. Hold this vision, because this is very special. You're the audience. Yeah, and if you don't cry, then I'm not happy. Yeah.
Darshan is also not nobody. He's a filmmaker. He's making a short film. Yeah. Aaj subah lovely. he came all the way from some other town. He was recording sounds over there. So come on, Harshit. Oh, lovely. Congrats. Finish. Yeah. So, But I also, I feel I'm a Yeah. nobody, but I must say that you should never feel that you're a nobody. I genuinely feel that. Because if we feel, see, if I made a movie and if you don't watch it and if you don't get affected by it, then it's pointless. Like I was telling Vishwadhar. So it's very thanks. important. Thanks. Thank you. Yeah, thanks for making this. Please Thank hold you. this vision and make a commercial film. We are lacking commercial film in Hindi or Hindi. What do you call it? Industry. Yeah. Yeah. Please make a like hard on commercial film. Okay. But this wasn't commercial or what? Yeah, we don't have like good commercial directors. Please, I'm requesting. This इसमें was गाना pretty है, commercial, कॉमेडी है, yeah. थप्पड़ है, सब है, I ड्रामा know. है, रुलाया, सब. Yeah. I'm just kidding. Yeah. But yeah, thank you. make a like out and out commercial. Okay. I should go. Harshit's favorite film is RRR. So I love RRR. I love RRR. I saw the film on a flight, and my producing partner Gitika, she works with Rajamouli sir. I saw it on a flight. I saw it much later because I was making Gulmohar Tabhi. But I told her that whenever you meet Rajamouli sir, please touch his feet from my side because it's such a brilliant film. I loved RRR. Yeah. Hi, I'm Pankaj. Hi. Hi Ajay. Hi Vishwadhar. First of all, I want to say I love the rhythm of the movie. Like it has like a Thank you. lyrical Yes. sort of rhythm. And right from the I really got drawn into the movie completely. And a few Thank things you. I just want to ask you. One is that I thought Manoj Bajpayee's character में Punjabi accent थोड़ा सा odd लग रहा था मुझे. ऐसा लग रहा था he was struggling with Punjabi accent. Right. That is one thing. And another thing is when he like slams the door on Sharmila's face and says "shut up." I found it very jarring. I was like, मतलब the character से एकदम बाहर आया. Yeah. So, Well, I mean, it was. Yeah, two things. One is the Punjabi thing. To be very honest, both Manoj and I, we did not want him to become very Punjabi because Delhi, mein, if you see, I know a lot of Delhi friends now. They speak in just like how you and me are. And words like "तुसी नहीं जा रहे हो, तुसी नहीं आ रहे हो." It's a filmy version of Delhi, to be honest. है वैसे. I mean, obviously in West Delhi, if you go and in certain parts of Delhi, अगर आप जाए तो वैसे लोग हैं. But in this particular locality, जहाँ पर Batras live, nobody would ever speak that way because they are people who've gone to Stephens, they are people who've gone to Hindu college, and they're educated people, and not by that sense, but their upbringing has been very different from the typical portrayal of जो हम पंजाबी देखते हैं in film. As compared to अगर आप कमल को देखो, कमल की हिंदी अगर आप देखो, तो that has a little more of the Punjabi that you are thinking. So it's also as per locality and upbringing. क्योंकि, for example, my big reference for Manoj's character Arun was Shashi Kapoor or Pranay Roy. You take those kind of people. Those are my references. कि अच्छा, we have to think like them. तो वो जब बात करें, they're very Punjabi. If you see the Kapoors, they're very Punjabi. Or even if you look at Rishi Kapoor, how he used to speak, he never used to say, "अरे तुसी इधर से जा रहे हो, वैसे जा रहे हो, वैसे." They would speak very quickly, or they would speak very slowly, but they would never use those Punjabi words. Anyway, we were trying for that. The other thing about the jarring of the shut up, to be very honest, that's the moment where everyone is shocked. कि ये बंदा जो कभी कॉकरोच नहीं मारता था, जब he can't even, he's so respectful to his mother, and his wife calls him Shravan Kumar कि you're the most idle son, कुछ नहीं बोलोगे, this, that. ऐसा बंदा, when he's so hurt that he doesn't know what is coming out of his mouth, and he slams the door and he shouts saying "shut up," that's a shaking moment. And so I'm glad that it felt a little jarring, if it's in the right way. It was. Yeah. I mean, it was meant to be like that. Yeah, it was meant to be like that. Yeah. I don't know why, but I kept on
having flashes of monsoon wedding in this movie. For some reason, the treatment is completely different, but I still Because of the had house stuff. those stuff and the flowers and Yeah. Well, I mean, I don't know the treatment of it. could be. See, I am a student of Mira's film, so I'm only as good as my school, to be honest. And the house stuff, I must say, yes, Monsoon Wedding had the house stuff. Many other, also Downton Abbey and many other films had house stuff. But if you see such a house in Delhi, in that locality and in that strata of the society, no house is complete without house staff. Every house in that locality has a cook and a maid and a driver and a chowkidar and everything. In fact, our family did not have a driver. So I keep joking that Batras are so rich, but they can't afford a driver. So because Arun is driving his own car. But so, and it would be very inhuman. जब मैं starting में जो कह रहा था कि, you know, I wanted this film to be portraits of people in this house. It would be very inhuman to just show the rich people or to just show people who own the house, because and a big inspiration was Mira's own family for me, because I used to keep going to her house and that was my biggest reference in terms of a Delhi home. And I know the way she treated her cook, and her cook was with her for 25 years, and she is from Hyderabad, where my parents are from. So every time I would go there, she would talk to me in Telugu, and I would respond in Hindi because my Telugu is not that great. So it's about how you look at that world. For me, when I looked at that world of Lutyens Delhi and Central Delhi, the house staff was always a part of such homes. 100%. कि जब भी मैं वो घर में जाता था, Yeah, I have family in Delhi, and yeah, they are, and the way it's, I mean, they have their own arc, so that's very beautiful and yeah. realistic. Yeah, so it was more about, you know, ये भी तो घर का ही हिस्सा है ना, इतने सालों से अगर ये है तो इनको क्यों सिर्फ चौकीदार के तौर पे ही देखे हैं. So that was our idea. And yeah. And about the last, the line that will stay with me, and it has stayed with me, is आपको दिया गया इसलिए आप आपको आप दे सकते हैं क्योंकि आप दी गई हैं. आप दे सकते हैं क्योंकि आपको दी गई थी. Yeah, you can give because you've received. Yeah, and somewhere it also felt like you're talking about generational everything, like breaking the generational cycle. Yeah, Yeah. मैं ऐसा सच्ची मानता हूँ कि you know you have to feel very grateful in life. I feel that as far as possible, and for that you have to reflect कि अगर आप सिर्फ आपको लगता है कि मैंने ही सब कुछ किया, मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, then you're going to feel lonely at some point, because then आप अकेले कर लो, आप ही कैमरा शूट कर लो, आप ही लिख लो, आप ही एडिट करो, आप ही बात करो, आप ही, तो ये सब की जरूरत ही नहीं, आप ही फिल्म देख लो खुद की. But the whole point is you have so many people supporting your vision. That is with the film. Like when I'm making a film, अभी मेरा एक 2.5 साल का बच्चा है. I can't go to a set and shoot for like 2 months and edit for like 6 months and be away from home if my family and my wife were not taking care of the child. I can't do it because they are my support system, and I have to acknowledge, I have to first of all embrace that, be grateful to that, and move, you know, just know that. So as far as possible, you have to be, you should know that fact that आप अकेले नहीं हो. You have people with you, and they're really your support system. And what you can do is because a lot of people are really with you. Yeah, yeah. So to end, I'll just say that I had a lot of takeaways. Thank you. There's so many moments that are going to stay, and it's a beautiful film. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. मैं खड़े होके बोल देती हूँ. Hi Rahul. Hello. Anupama this side. I'm a psychologist, a counselor, and I love the movie. All in all, I would say what I loved was the way you have touched so many social issues in a very subtle way. I would say, starting from adoption issues, which are there in the society even now,
Then the untouchability which Sudhakar was showing towards Reshma. Then the thing which touched me the most was a woman taking the decision to live her own life at the age of 76. That was the most beautiful thing, where she decided, to just sell away the house and then move to a place where she would be happy for, because she feels now that her responsibilities towards the family is over, Right. and they're all settled, and the way she wants her granddaughter. Yeah. That again was very beautiful. Like, say that during our times it was not so easy. With you all, love to hota hai. Like, there's certain lines which are very catchy. Like the lady has now said before me that usko pyar mila to usne aapko mila to aapne diya. Right. That's so true. When you get love, it's easy to pass. Yes. If you never experience love, how will you give it? So it's all in all a beautiful movie, very different, and I would recommend everybody to watch it more because it is not women oriented, but then still so much, I would say, revolving around Sharmila ji, and finally whatever decision she takes is respected by everybody, accepted and respected by everybody. So that is the beauty of the movie, and I loved it. Congratulations Thank to you you so and your much. team. Thank you so Looking much. forward to. Thank you. Thank you. Yeah. Hello everyone. We have also on that note also. Yes. Go for it, Jairam. हाँ, on that note, मेरा भी वही ख्याल था कि जैसे this film also shows us ना कि it's not always about resisting, it's not always about कि हमारे पास problems है और हम उसको ऐसा कुछ solution sometimes in family तो हमारे जो problems है फिर हमारे जो दरारें हैं रिश्ते में उनको accept करना. So और भी इस फिल्म में बहुत कुछ. The favorite scene I had was जो अपने father से confront करते हैं अरुण, and that dialogue which she mentioned, that was a very what I would say, very touchy scene. मतलब वो बहुत मतलब that scene also surprised me when he replied कि आपको मिला नहीं, आपको मिलेगा तभी आप दे सकते. So yeah. Also, I would like to ask you on one last question कि जैसे इसमें कुछ anecdote, if ये मूवी में बहुत कुछ हमारे खुद की जिंदगी से लिए हुए हैं, हम हर एक रिश्ते के साथ कनेक्ट कर सक रहे हैं. आपके कुछ रियल एक्सपीरियंसेस आपने इसमें पुट किए हैं, like how much of your life have you put into it? So many. I think if you're making such an intimate piece and such an intimate, if you're writing such an intimate story, you have to dive into people that you know, and you have to dive people into incidents that you've experienced or you know of very closely. So of course, I mean, obviously I can't reveal personal people because they'll come behind me, but बहुत सारी चीजें. For the example, I'll just take a very broad example. Like Arpita and I, we had this friend, we still have her, who was dating this guy, and she was a theater actor. And during the rehearsals of one of the project, she fell in love with a girl. And when we got to know, I don't even know whether she's dating the girl now or the guy now, I don't know. But just that whole idea made me wonder, okay, at that moment, what would our friend have gone through? And who would she have spoken to? Or would she have just given up? So वो एक idea था. And then we made it our own. We fictionalized it and we made it our own. Same thing about adoption. Like I said, मैं और मेरी wife, we were planning to start a family, and we of course spoke of what do you feel of adoption, and we had our own points of view. So, and others, our friends also had their points of view. So it was I was always intrigued by this whole concept of adoption. Is it more important to become a parent and to feel like a parent, or is it more important to have your own blood? And both are right. It's again, it's about what you choose and how you feel. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं. आदि का जो है, आदि का जो struggle है as a 30-year-old, as a late 20-year-old, I have also gone through it कि मैं अपने बाप से पैसे नहीं लूंगा. And हम सब, we've all gone through it. तो एक ego आ जाता है कि यार मैं अपने बाप से पैसे नहीं लूंगा and मैं सब खुद करूंगा, and rightfully so, and that's a very good thing.
But at the same time, there's nothing wrong if you want to take money from your father also, because life जो है वो बहुत छोटी है. It's very short. So do you want to waste that time and all struggling and all, or just work faster towards what you want to achieve and make your people a part of it? So lots of things. I mean, they're all inspired from people that I know or incidents that I know, but then fictionalize it and make it like a filmy story. So we जिस दिन मैंने देखा ना गुलमोहर, उस दिन क्या हुआ, आई सैट डाउन. ऐसा रहता था कि मुझे ऐसा लगता था, इट ऑल्सो है कि मेरे वैसे बचपन का दोस्त कोई है नहीं कि वी गो बैक इन टाइम वी चैट, सो ऐसा कुछ है नहीं. बट जब देखा तब वो चीज दिमाग में आने लगा कि हाँ मेरा भी बचपन गुजरा है. लाइक वो होता है ना कि कुछ कुछ चीजें हम भूल जाते हैं इसलिए क्योंकि वो हमको लगता है यार दिस इज नॉट वर्थ रिमेम्बरिंग, कि these memories are not worth it. So लेकिन वो चीज जब वापस से याद किया, I was like scratching like ये moment में ही we have to cherish it whatever it is. I think so. I mean, like, work hard also. ऐसा नहीं कि ये moment cherish करने के लिए you'll sit back and relax. Work hard also, but हाँ, I feel इतना जोर नहीं देना चाहिए, इतना लोड नहीं लेना चाहिए. Enjoy the moment. All right. Yeah, and no, finish. No, that's it. I think I've spoken. No, I think in general also, I'm a very, I like to be a very optimistic guy. So, and I like to have that approach towards life. So Gulmohar is nothing but a reflection of that, really. All right. Cool. So I think that's about the questions from the audience today. I hope you all Thank you so enjoyed the film. much. And thanks a lot, Rahul, for taking your time out and coming and Thank sharing your you. thoughts and taking our questions. Thank you, Ajay, for calling me. And I must say, Ajay, like I said, he worked on the first 6 months of the pre-production, and he was he's a very enthusiastic collaborator, as I say. Yeah. But thank you for, first of all, showing the film to all these lovely people, and thanks. It was a lot of fun talking to you. Definitely. Looking forward to your next projects, and hopefully at some point we'll organize and like a physical film festival in Raipur, like in the coming decade. So hopefully we'll get to have you on like in our town and like watch films together and things like Decade, I just said, मैं इतना नहीं सोच रहा decade. But thank you really. It was a lot of fun. Please spread the word, show it to your family and friends and everybody else, and tweet and Instagram and all that things which I am learning now. Yes, we'll do that. All right. Thanks. Thanks, Vishwadhar. Thanks. Bye, Ajay. Bye. Thanks. All right. Thank you so much for your time. Bye. Bye.